नमो भगवते वासुदेवाय। अथ श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास माहात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे कुमारी विलापो नामाष्टमोऽध्यायः। श्री नारायण उवाच। अथ श्री रुक्मिणीनाथो वैकुण्ठं गतवान् मुदा तत्र गत्वाधिमासं तं वासयामास फाल्गुनं। तत्रत्य वसतिं प्राप्य मोदमानो भवत्तदा मासानामधिपो भूत्वा रमते विष्णुना सह। द्वादशस्वपि मासेषु मलवासं वरं प्रभु विधाय मनसा तुष्टो बभूव प्रकृतिप्रियः। श्रीकृष्ण उवाच। जानेऽहं राजसार्दूलं तपोवनमुपागतैः भवद्भिर्दुःखसंमग्नैर्नादृतः पुरुषोत्तमः। वृन्दावनकलानाथ वल्लभः पुरुषोत्तमः प्रमादात् गतवान् मासो भवतां काननौकसाम्। यस्माभिर्नैव विज्ञातो भयद्वेषसमन्वितैः गाङ्गेयद्रोणकर्णेभ्यो भयसन्त्रस्तमानसैः। कृष्णद्वैपायनादाप्त विद्याराधन तत्परे इन्द्रकीलं गतवती बीभत्सौरणशालिनी। तद्वियोग परिक्लिष्टैर्न ज्ञातः पुरुषोत्तमः युष्माभिः किं प्रकर्तव्यम् अदृष्टमवलम्ब्यताम्। अदृष्टं यादृशं पुंसां तादृशं भासते सदा अवश्यमेव भोक्तव्यम् अदृष्टजनितं फलम्। सुखं दुःखं भयं क्षेमम् अदृष्टात् प्राप्यते जनैः तस्माददृष्टनिष्ठैश्च भवद्भिः स्थीयतां सदा। अथापरं प्रवक्ष्यामि भवतां दुःखकारणं सेतिहासं महाराज श्रूयतां मनमुखादहो। श्रीकृष्ण उवाच। आसीत् काचित् महाभागा पूर्वजन्मनि सुन्दरी मेधाविद्विजमुख्यस्य पुत्री जाता सुमध्यमा। कालेन गच्छता राजन् सञ्जाता दशवार्षिकी रूपलावण्यललिता नयनापाङ्गशालिनी। चातुर्यगुणसम्पन्ना पितुरेकैव पुत्रिका वल्लभातीव तेनासौ चतुरा गुणसुन्दरी। लालिता पुत्रवन्नित्यं न कदाचित् प्रलम्भिता साहित्यशास्त्रकुशला नीतावपि विशारदा। तन्माता स्वर्गता पूर्वं पित्रा सा पोषिता मुदा पार्श्वस्थालिसुखं दृष्ट्वा पुत्रपौत्रसुखस्पृहा। तर्कयन्ती तदा बाला मामेवं च कथं भवेत् गुणभाग्यनिधिर्भरता सुखदसत्सुता कथम्। एवं मनोरथं चक्रे दैवेन ध्वंसितं पुरा किं कृत्वा किं विदित्वाहं कमुपास्ये सुरेश्वरम्। किं वा मुनिमुपातिष्ठे किं वा तीर्थमुपाश्रये मम भाग्यं कथं सुप्तं भर्ता कोऽपि न वाञ्छति। पंडितोऽपि पिता मूढो मम भाग्यवशादहो विवाह काले संप्राप्ते
न दत्ता सदृशे वरे अध्यक्षाहं सखे मध्ये कुमारी दुःख पीडिता नाहं स्वामी सुखाभिज्ञा यथा चालिगणो मम मम भाग्यवती माता कथं स्वर्गं गता पुरा एवं चिन्ताकुला बाला मनोरथ महोदधौ निमग्ना मोहसलिले शोकमोहोर्मि पीडिता मेधावी ऋषिराजोऽसौ विचचार महीतले कन्यादाननिमित्तं च विचिन्वन् सदृशं वरं तादृशं वरमप्राप्य निराशः स्वमनोरथे सुता स्वकीय भाग्याभ्यां भग्न संकल्प पंजरः अवाप दैव योगेन ज्वरं तीव्रं सुदारुणं स्फुटत् सर्वांग संभिन्न तापज्वाला समाकुलः श्वासोच्छ्वास समायुक्तो महादारुण मूर्छया प्रस्खलन् निपतन् भूमौ मदिरामत्तवद्वृषम् आगच्छन्नेव भवनं सपपात धरातले यावत् सुता समायाता पितरं भयविह्वला तावन्मुमूर्षुः सञ्जातो भूसुरस्तामनुस्मरन् भाविनार्थबलेनैव सहसा जातवेपथुः कन्यादान प्रसंगोत्थ महोत्सव विवर्जितः अथ प्राचीन गार्हस्थ्य कृत धर्म परिश्रमात् संसार वासनां त्यक्त्वा हरौ चित्तमधारयत् सस्मार श्रीहरिं तूर्णं मेधावी पुरुषोत्तमम् इन्दीवरदलश्यामं त्रिभङ्गललिताकृतिम् राशेष राधारमण प्रचंड दोर्दंड दूराहत निर्जरारी अत्युग्रदावानलपान कर्ता कुमारिकोत्तारित वस्त्रहर्ता श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी राधेश दामोदर दीननाथ मां पाहि संसार समुद्रमग्नं नमो नमस्ते रसिकेश्वराय इति मुनिवचनं निशम्य दूता झटिति समाययुरामुकुन्दलोकात् तदनुमृत मुनिं करे गृहीत्वा चरणचरोरुहमीयुरीश्वरस्य प्राणोत्क्रमणमालोक्य हाहेति सारुदत्सुता अंके कृत्वा पितुर्देहं विललाप सुदुःखिता कुररीव चिरं सातु विलप्यात्यन्त दुःखिता उवाच पितरं बाला जीवन्तमिव विह्वला बालोवाच हा हा पितः कृपा सिन्धो आत्मजानन्ददायक कस्यांके मां निधायाद्य गतोऽसि वैष्णवं पुरम् पितृहीनां च मां तात को वा संभावयिष्यति भ्राता मे नैव बन्धुश्च न मे माता तपस्विनी भोजनाच्छादने चिन्तां को मे तात करिष्यति कथं तिष्ठाम्यहं शून्ये वेदध्वनि विवर्जिते आश्रमे ते मुनिश्रेष्ठ अरण्य इव निर्जने अतः परं मरिष्यामि जीवने किं प्रयोजनम् असम्पाद्यैव वैवाहं विधिं पिबुहि त्रिवत्सल क्व गतोऽसि पितस्तात इहागच्छ तपोनिधे वाणीं वद सुधाकल्पां कथं तूष्णीमवस्थितः उत्तिष्ठोत्तिष्ठ हे तात चिरं सुप्तोऽसि साम्प्रतम् इत्युक्त्वा श्रुमुखी बाला विललाप मुहुर्मुहुः
मुक्तकण्ठं रुरोदार्ता कुररीव सुदुःखिता तत्सुतारोदनं श्रुत्वा विप्रास्तदवनवासिनः अतीव करुणं को वा रोदित्यस्मिन् तपोवने मेधार्षेः सुता शब्दं शनैर्निश्चित्य तापसा ससंभ्रमा समाजग्मुर्हाहाकार समन्विता आगत्य ददृशुः सर्वे सुताङ्कस्थं मृतं मुनिं ततः सन्दुरुदुः सर्वे मुनयः काननौकसः सुतोत्सङ्गाच्छवं नीत्वा श्मशाने शिवसन्निधौ अन्त्येष्टिं विधिना कृत्वा ते दहन् काष्ठवेष्टितम् ततः कन्यां समाश्वास्य सर्वे ते स्वगृहान् ययुः कन्यापि धैर्यमालम्ब्य यथाशक्त्यकरोद्व्ययम् इत्योर्ध्वदेहिकविधिं प्रणिधाय पित्र्यं पुत्री निवासमकरोच्च तपोवनेऽस्मिन् सा विव्यथे पितृज दुःखदवाग्निदग्धा रम्भेव वत्समरणात् सुरभीवबाला इति श्री बृहन्नारदीये पुराणे पुरुषोत्तममासमाहात्म्ये श्रीनारायण नारद संवादे कुमारी विलापो नामाष्टमोऽध्यायः। श्री पुरुषोत्तमार्पणमस्तु।